Good morning, sir. Good morning. Vaibhav, keep your video on. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Vaibhav, keep your video on. We'll just wait for one more minute and let others join. Okay, let's get started. We can't waste more time. Okay, so what were we doing last time? Okay, we did the method of finding distance between two planes. Okay, in the vector form as well as in the Cartesian form. Okay, so in this question, we can clearly see that the form given is a vector form. Okay, so let me just increase its size a bit. स्टूडेंट्स आपको अपना कैमरा ऑन रखना है. वैभव एंड अंजलि, बेटा कैमरा ऑन रखिए आप अपना, और ये बार बार ऑफ नहीं होगा. ठीक है वैभव, कैमरा ऑन करो बेटा अपना. So right, so the distance between a point and a plane is the thing that we did last time. Now there usually what we did was that the form is this, is equal to D. Okay, and a point A is given, from which we have to find the distance from this plane. This is a plane and this is a position vector of a point. Okay, so we had to do this, but for good morning. Karthik, keep your video on. Aryan Nagar, keep your video on. Vaibhav, आपका वीडियो फिर ऑफ हुआ था. Okay, so अंजलि आपको स्विच नहीं करना है कैमरा नोटबुक की साइड. अंजलि स्विच नहीं करना है बेटा कैमरा आपको. आप दिखने चाहिए इसमें.
Yes. So now, however, remember that this form requires this to be unit vector. Okay, if this is the unit vector, only then the formula that we worked out, what was the formula? We said that the formula is d minus the vector dot the unit vector, okay, and the modulus of this. But this requires this vector to be the unit vector. However, this is clearly not a unit vector. We don't even have to really calculate the modulus here, right? Everything is bigger than 1. Of course, the modulus will be bigger than 1. So what we have to do is we can get it in this form by dividing with the modulus of this. Okay, so let's do that. What is the modulus? Let's first find the modulus. 6 square plus minus 3 whole square plus 2 square, okay, is equal to, so this is the modulus of the उड़न particular vector. Okay, now सर this 49 आ गया. 36 plus 9 plus 4. Okay, 49, which is 7, right? We 7. can only take the positive value. Okay, so we can now rewrite this equation as 6 minus 3j plus 2k, okay, and divided by 7 here also and 4 by 7 here also, right? Now this is in this form where this thing is the unit vector n, and this thing, this entire thing is the distance from the origin, right? And a, we already know it is 2i plus 5j minus 3k. Okay, so now we can apply the simple formula, which is this. So yeah, sorry. Okay, d is 4 by 7 minus the dot product of this and this, right? So let's do the dot product. This is 2 into 6 is 12. 5 into minus 3 is minus 15. Minus 3 into 2 is minus 6. Okay, by 7. Okay, so what does this come out to be? This comes out to be 4 minus स्टूडेंट्स 12 अपना plus कैमरा ऑन कर लीजिए. 16 plus 6 by 7, which is 5, right? Yeah, 13 by 7. Okay, so this is the distance of this point from this plane. Okay, before applying the formula, we just needed to convert it into this form. That was the only thing which we had to do. Okay, now we have technically done whatever is in the syllabus. Okay, the only angles between lines, angles between two planes, angle between a line and a plane, okay, especially the angle between a line and a plane used to be a slightly tricky, counterintuitive kind of a section, which to ease this year उन्होंने कोर्स में से ही निकाल दिया है, right? Making this a lot easier and a shorter chapter than the last year. ठीक है बेटा, suddenly I am seeing that other than the 3 students सबने कैमरा ऑफ कर दिया है. Keep your camera on. Manish, Nikhil. सर रिमूव कर दीजिए जो बच्चे बार बार ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्लास भी डिस्टर्ब रहेगी. एंड सौरभ, स्विच नहीं करना है बेटा कैमरा. ठीक है,
I'll wait for another 3-4 minutes. आप उसमें कैमरा ऑन कर लीजिए. I'll continue with the class till then. ठीक है. उसके बाद I'll have to remove students who are not there. Okay. Whose camera is not on. Okay. आप उतने समय में ऑन कर लीजिए सब लोग. Okay. So now let's do a few questions from this exercise. The remaining questions you have to do on your own. Okay. So in each of the following cases, determine the direction cosines of the normal to the plane and the distance from the origin. ओके सो ये सब जो इक्वेशंस हैं इनमें हमें डिस्टेंस भी निकालना है फ्रॉम ओरिजिन और हमें डायरेक्शन कोसाइंस भी निकालने हैं राइट ऑफ द नॉर्मल. तो कैसे करेंगे? ये वाला क्या है? ये इसको हम कैन वी रीराइट दिस इक्वेशन इन सम फॉर्म दैट वी कैन इजीली वर्क विद. ओके लेट्स कॉल इट 0x plus 0y plus 1z is equal to 2. So this we have now written in the normal form of the equation. Also, so what are the direction ratios? Actually, the direction ratios we can directly write from here 0, 0 and 1. But because their modulus is equal to 1, they are technically also the direction cosines, right? So there is no further calculation needed. These are the DCs. And if these are the DCs, then this should be the distance, right? So this is the DC and 2 units is the distance from origin. Okay. Now let's do the next one. Now the next one is pretty much already written in the form we want. It is 1x plus 1y plus 1z is equal to 1. So direction ratios are these, but their modulus is 1 square plus 1 square plus 1 square under root, which is root 3, right? So these will not give us the direction cosines. These will only give us the direction ratios. So how do we convert it into direction cosines? To convert it into direction cosines, we will have to divide this equation by under root 3. Okay, so let's do that. So this equation will become x by root 3 plus y by root 3 plus z by root 3 is equal to 1 by root 3. Now this is the distance. And 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 are the direction cosines. Okay. Let's do the next one. 2x plus 3y minus z is equal to 5. Again, the normal form, but clearly we know that the modulus is not one of these three coefficients, right? So what will we do? We will find the modulus. 2 square plus 3 square is 13 plus 1 square is 14, right? So under root 14. Let's just divide this equation by under root 14. So it will become okay. This is the distance. And these three are the direction. Okay. Now let's do the last one. 5y is plus 8 is equal to 0. Right? We have to get it in this form. So what will we do? We can write it as 5y is equal to minus 8. But this number cannot be negative, because it is a distance. Distance has to be positive. So first of all, let's multiply it by minus 1. So we will get minus y is equal to 8. Okay. And just for completeness sake, let me write it as, okay,
Now to make the modulus of this side as 1, we will divide it by 5. Okay, so it will become 0x minus y plus 0z is equal to 5 by 8. Oh, sorry, 8 by 5. 8 by 5. Okay, so this is the distance. And 0, -1 and 0 are the DCs. ठीक है, तो ये this question is pretty important for you to understand, क्योंकि इसमें हमने कई सारी चीजों का यूज किया है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस हैज टू बी मेड पॉजिटिव, देन द मॉड्यूलस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड हैज टू बी मेड 1, and also the missing coefficients have to be put in because direction cosines तो तीनों ही देने पड़ेंगे. We can't just give one. Okay, so practically this is the question. If you can do, you can do all the others. Okay, find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 units from the origin and the normal to the vector is this. Okay, so vector equation of a plane which is at a distance of 7 units, हमें d दिया हुआ है, from the origin and normal to the vector. Okay, this is some misprint in the book. Okay, it should be plane. Normal to the plane is this. Okay, now how will we do it? This clearly does not have a modulus of 1, यानी कि ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है. ओके, सिंस ये यूनिट वेक्टर नहीं है, पहले इसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे. तो हमारे पास पहले n वेक्टर दिया गया है, नॉर्मल वेक्टर विच इज दिस. Okay, we have to make the unit vector with it. Okay, which is the modulus से divide करना. Now what is the modulus of this? Let's do it on the side. 3 square plus 5 square plus -6 whole square. Okay, which is 9 plus 25 plus 36. Okay, which is under root of 7. Okay, so this has become under root 70i plus 5 by under root 70k minus 6 by under root 7. Right? And we know the distance. So what is the formula we are going to use? R vector into the dot product with the normal vector is equal to distance. Right? So it's, now we only have to go ahead and put the values. So स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. आपको कितनी बार रिमाइंड कराना पड़ेगा बेटा? सर कैमरास ऑफ हैं स्टूडेंट्स के. Okay, I'm just Manish is the only person your camera is off. बेटा क्यों ऐसा क्यों है? आपने अभी तक ऑन किया ही सर नहीं जब है. इनको बोला जाता है तब इनके कैमरा ऑन हो जाते हैं, अदरवाइज जब आप स्टार्ट करते हैं दोबारा से कैमरा ऑफ हो जाते हैं. Manish, I am going to remove you now. Okay. ओके, और बेटा कोई भी अपना कैमरा ऑफ मत करिए बीच में. देयर इज सौरभ, यू हैव स्विच्ड ऑफ योर कैमरा. व्हाई? डोंट प्ले विद द कैमरा. उसको ऑन रहने दो, वो कोई कुछ तकलीफ नहीं कर रहा है आपको. निखिल नागर अपना कैमरा ठीक कीजिए. किसी ने वॉल की साइड स्विच किया है, किसी ने बुक की साइड स्विच किया है. वैभव
क्या प्रॉब्लम है बेटा? वैभव थोड़ा सा अपने फोन को दूर रखिए, वो ठीक रहेगा। ओके, हाँ अभी बिल्कुल ठीक है। एंड आई कांट सी निखिल हु इज रावल, द, स्विच क्यों किया है कैमरा आपने? ये निखिल है राइट, आई कांट सी द नेम है बट निखिल नोटबुक निखिल, मत दिखाइए, आप अपने को ही दिखाइए। नोटबुक तब दिखाइए अगर आपको कोई चीज हमें दिखानी है उस समय स्पेसिफिकली। हाँ ओके, दिस इज गुड नाउ। ओके सौरभ, कीप योर कैमरा ऑन। बच्चे ऐसा ना करो आप लोग। ओके, डोंट डू दिस, इससे हमारा सबका टाइम वेस्ट हो रहा है राइट। ऑलरेडी आई मीन द अटेंडेंस इज सो पुअर, है ना। वी आर, आई एम टॉकिंग टू 6 students today, right, which is out of a class of I think maybe close to 40 students, right, in total mathematics. So which is a very very small attendance already. कम से कम आप लोग आए हैं, मन लगा के करिए, एंड इट शुडंट बी डिफिकल्ट। दिस इज अ इजी चैप्टर अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान देंगे। सिंपल कैलकुलेशंस हैं इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं है क्वेश्चन में, बस हमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। इसको आप कंपेयर करिए कैलकुलस के चैप्टर में, जिसमें हमें कितने सारे फॉर्मूले याद रखने, कितने सारे ट्रिक्स याद रखने, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना। दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर दैट वे। लेकिन अगर आप छोटी चीजों पे, जैसे कि यूनिट वेक्टर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर रिजल्ट सही नहीं आएगा इसमें। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड do a couple of more questions. Find the Cartesian equation of the following planes. ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है? हमें वेक्टर इक्वेशन दी गई, इससे हमें कार्टेशियन फॉर्म निकालना है। ठीक है ना। तो ये किस तरह की वेक्टर इक्वेशन लिखी गई है, ये पहले इस इक्वेशन को समझ लेते हैं, ये कैसे लिखी गई है। ये इक्वेशन में हमारे पास जो है एक वेरिएबल पोजीशन वेक्टर है, जिसका डॉट प्रोडक्ट एक नॉन यूनिट वेक्टर के साथ है। तो नॉन यूनिट वेक्टर हो गया हमारा ये, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। सो इस कांस्टेंट को हम लिख लेते हैं कैपिटल डी, राइट। तो ये वाली फॉर्म है, ठीक है। अगर ये वाली फॉर्म है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं कार्टेशियन में? कार्टेशियन में दिस फॉर्म बिकम्स ax plus by plus cz is equal to d. ओके, और क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये क्या होनी चाहिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिए इस वाले में ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। This is not distance from origin till this thing is a unit vector। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म है, इसमें डायरेक्शन रेशियोज लिखे जाते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज तो बहुत इजी है, इसका 1 1 -1 और कैपिटल डी ये है। तो हमारा जो आंसर है ए का वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ए की जगह 1, सो एक्स आ गया, प्लस वाई एंड माइनस जेड is it. Okay, now let's do the second one also. So second one exactly same problem hai, there is no difference, right? So we can just write plus 3y minus 4z is equal to 1. Okay, as simple as that. Now this, look at this one. So यहाँ पे जो हमें यूनिट वेक्टर नहीं है खाली, यहाँ पे हमारा कुछ सब्ट्रैक्शन भी किया गया है।
क्या है ये? तो ये कोई पैरामीटर्स है, right? These are just S is some parameter here, T is some parameter here. Okay, the form of the equation is still the same, right? So we will again go and write the answer straight away. हमें इससे confuse नहीं होना है. यहाँ S और T जो है कोई parameters. Okay, so we will just say S minus 2T X plus 3 minus T Y plus 2S plus T Z is equal to 50. Okay. Okay, I'm just looking at the videos again. सबने फिर वीडियो ऑफ कर दिया है लग रहा है. निखिल ने अभी भी ऑफ रखा है. निखिल निखिल नागर, यू आर द ओनली वन जो कह के चलो निखिल गए छोड़ दो. Okay. In the following cases, find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from the origin. Okay. तो कैसे करेंगे हम? एक क्वेश्चन कर लेते हैं एटलीस्ट. ठीक है, ये इसमें हम किस तरह से करते हैं. ये हमारे पास जो है ये एक प्लेन है, ठीक है, और हमारे को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालना है. ठीक है, किसी पॉइंट से भी नहीं निकालना है, फ्रॉम ओरिजिन निकालना है. तो हमारी प्रॉब्लम और भी आसान हो जाती है. क्या है हमारी प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई प्लेन है इस तरह. अब इस प्लेन पे हमने ऐसे करके एक परपेंडिकुलर बना दिया, राइट? ये जो परपेंडिकुलर हमने इस प्लेन पे डाला है, राइट, दिस इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो ये n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगा, राइट? अब अगर ये n यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है तो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का क्या होगा? पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का होगा यूनिट वेक्टर इनटू दिस लेंथ, और ये लेंथ है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन यानी कि स्मॉल d. तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी d n यूनिट वेक्टर. ठीक है, एक बार हमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो जो ij के कोएफिशिएंट्स हैं वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, राइट? सो लेट्स डू दैट. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं? उस फॉर्म में लिख लेते हैं जिस फॉर्म से हम n यूनिट वेक्टर निकाल सकें. ठीक है, चाहे वो कार्टेशियन फॉर्म ही क्यों ना हो, राइट? सो जैसे ये है कार्टेशियन फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सबसे पहले तो हम इसको पॉजिटिव होना चाहिए इस साइड पे ले आते हैं. 3y plus 4z is equal to 12. ये एक पॉजिटिव नंबर है which we are happy with this, but the modulus of this side is not 1, so we have to do that. उसके लिए हम इसे को किससे डिवाइड करेंगे? इस नंबर से डिवाइड करेंगे, which is 4 plus 9 plus 16, which is under root 20. ओके, तो अब जो है ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं. वी विल डिवाइड इट बाय रूट 29 ऑल द वे. Now this is the distance from origin, right? This is the distance from the origin, or these
are the direction cosines of n unit vector. Okay, so position vector of foot of perpendicular is equal to, okay, into n unit vector, right? And the d is 12 by root into the unit vector, which is 2 by root 29i plus 3 by root 29j plus 4 by root 29. Okay, and we know we can go ahead and multiply, and we will get 24 by 29i plus 36 by 29j plus 48 by 29. So these are the coordinates, right? Because this is the position vector, these are the coordinates. So the answer we will write as 24 by 29, 36 by 29, and 48 by 29. This is are the coordinates. Understood? So this is the way we will do the remaining. I'm not going to do all of these because they are all very similar. There are no additional tricks. Okay, now let's do a couple of different type of questions. Find the vector and the Cartesian equations of the plane that pass through the point a1 comma 0 comma minus 2, and the normal to the plane is this. So which form of the equation are we talking of here, right? So we have a point given. So अभी वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, और हमारे पास एक पॉइंट भी है और हमारे पास एक नॉर्मल भी है, राइट? तो इस केस में क्या करेंगे हम? The equation is simply r vector minus the position vector of the point into the normal is equal to 0. Okay. ये कोई जरूरी नहीं है कि ये एक यूनिट वेक्टर हो. Fine. So let's just do that. R minus a vector. Okay. R minus I minus 2a. Okay. This into the dot product of the normal, which is I plus j right. Understood? Fair enough. Now let's write it in the Cartesian form. How do we write it in the Cartesian form? X minus x1 into the direction ratio plus y minus y1, okay, plus the third direction ratio, which is c, z minus z1. So डायरेक्शन रेशियो क्या है? ये है 1, 1 और -1. So let's just do that. And so x minus 1 into 1 plus z 1 y minus 0, okay, minus 1 and z minus 2, which will become z plus 2 is equal to 0. Okay, now we can just simplify it. X minus 1 plus y minus 0
minus z minus 2, which is x plus y minus z is equal to, this is our answer. Okay. Then the second question is also exactly the same, right? We are given a point and the normal vector to the plane is also given, okay, which is exactly the same question. You just have to plug in different values, okay, so that you can do at home. Find the equations of the plane that passes through 3 points. Okay, now it is a 3-point form of the equation. What do we do in such a thing? We have to do this, right? If you remember, into a cross product. The cross product can be b vector minus a vector cross c vector minus a vector. It could be any of the vectors, it's all okay, but usually we write it in this form, right? Is equal to 0, right? Because this is going to be perpendicular to this. Now, that's all that we have to do there. तो सबसे पहले जो है हम ये निकाल लें, तो b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्या है? b वेक्टर माइनस a वेक्टर इज 5i plus 3j minus 5 minus minus 1, so which is minus 4. Now let's do the c vector minus a vector, which is minus 4 minus 1, which is minus 5. Okay. Then minus 2 minus 1 is minus 3j, and 3 minus minus 1 is 4, so plus 4. Okay. Now we can actually find okay, so we can find this by writing it in the determinant form and all that. But can somebody tell me what this result will be even without doing that 0. calculation? Why? Why would this result be 0 even without doing the calculation? Bolo beta. Why would this be 0? 0 is the correct answer, but why will it be 0? See, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? इसके हैं 5, 3 और -4. इसके डायरेक्शन रेशियो Opposite है क्या सर. है? हाँ, ऑपोजिट नहीं है, ओके, प्रोपोर्शनल है. This divided by this, 5 by minus 5 is same as 3 by minus 3, which is same as minus 4 by 4, which is minus 1. यानी कि DRs are proportional. इसका क्या मतलब होता है DRs are proportional? मतलब this vector is parallel to this vector, यानी B minus A vector is parallel to C minus A vector. और हमें पता है पैरेलल वेक्टर्स का मतलब उनके बीच में जो एंगल है 0 है, यानी साइन थीटा 0 है. पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होता है. हमें वो पूरा डिटर्मिनेंट बना के कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. तो अब ये पूरा का पूरा जो है 0 हो गया, राइट?
अगर ये 0 हो गया तो इसका डॉट प्रोडक्ट भी किसी भी चीज के साथ 0 होगा, राइट? तो Yes, ये क्या yes, है? sir. इसका मतलब तो इक्वेशन आई नहीं हमारी ये। क्या चक्कर हो गया? ये क्यों नहीं आ रही हमारी इक्वेशन? जब इक्वेशन निकालने को कहा गया 3